Hi friends, welcome back. We are not stupid. Israel's fiery comeback at UNGA session after Palestine envoy mocks IDF. ये एक अच्छा मेरे ख्याल से एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि भैया फालतू की जो है तुम अगर बातें करोगे, चाहे वो यूएन हो चाहे कुछ हो, जब हमारे देश की बात आ रही है तो हम किसी की नहीं सुनेंगे. चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. Enough is enough. अच्छा, This is how ये पैलेस्टीन Israel एम्बेसडर है. conducts its assaults through atrocities, because its goal is not security, not the security of those held captive in Gaza, not the security of the Israeli people, but the destruction and displacement of the Palestinian people, even if that means prolonging the conflict indefinitely. What is the meaning of this humanitarian ceasefire? There's no such a thing. This is one big lie, a whitewashing of the truth. A humanitarian ceasefire means a terrorist saving ceasefire. We're not stupid. बात तो है. The Israeli assault is a war against Palestinian civilians, Palestinian children, Palestinian history, Palestine presence, Palestinian existence. It targets the population, the hospitals, the infrastructure, the homes, the bakeries, the landmarks, the historic mosques and churches that stand witness to our diverse and long history. Israel has destroyed and flattened entire neighborhoods, displaced virtually every Palestinian in Gaza, brought back the scenes and memories of the 1948 Nakba with the massacres and the forced transfer of our people. It also targets our present and future, killing engineers and doctors and poets and academics. हमास ने पहले सोच के It करना था also ना, क्यों किया targets वो? those who could document the crimes and inform the world, the journalists. Mr. President, 1 million Palestinian children in Gaza are facing a death sentence that can take effect at any moment. Remember what the Secretary General said. The Gaza Strip is a graveyard of children. No country should be part in issuing such death sentences or accepting to co-sign with the murderers the death certificates for our children. जो इजराइल के चिल्ड्रनों को लेके गए उनको किया वो क्या घर Mr. घर में President, जाकर. people around the globe have been calling for an immediate humanitarian ceasefire, of course, including the Secretary General and all the leaders of UN humanitarian agencies. The United Nations, through the Secretary General and all its agencies, have been calling for an immediate humanitarian ceasefire. तभी तक The जवाब दिया कि क्या humanitarian मतलब है and तुम्हारा. human rights community have been calling for an immediate humanitarian ceasefire. In the face of such atrocities, there is only one moral position, one defensible position. Ceasefire now. तब मॉरल कहाँ गया था जब हमास ने इनोसेंट Ceasefire इजरायलीज को now. अटैक किया था And stop और अभी तक हॉस्टेजेस लेके बैठा हुआ है. तब मॉरल कहाँ जा रहा है? और उससे तो बेचारे मर रहे हैं. वही तो उनका कोई बात नहीं करेगा जो हॉस्टेजेस वो लेके गए हैं. Stop the genocide
committed against the Palestinian people and their children. And I thank you very much. Colleagues, I could stand here and repeat the horrifying atrocities committed by Hamas on October 7th, when there was a ceasefire in place that was violated by Hamas's planned massacre. बिल्कुल Planned. planned. I could discuss the mass rape and mutilation of women, the burning of entire families alive, the beheading of babies. But I have already stood here and showed you footage from that dark day. I have repeatedly discussed the horrors and the bloodshed, but sadly this body prefers to keep its head in the sand. Sadly, this is what the UN has become. So instead of talking about the past, I will try to remind this body of the present and talk about the future. The future that awaits us if the Hamas Nazis are not eliminated. If there's a ceasefire that will allow Hamas to regroup, to rearm, to continue their reign of terror in Gaza. That's the meaning of a ceasefire. This resolution that so many of you sickeningly, I have no other word, applauded, calls for an immediate humanitarian ceasefire. So I must ask you today, what does this mean? What is a humanitarian ceasefire? Is it a ceasefire for 6 hours to allow food and water to enter Gaza? Clearly not, seeing as every single day Israel facilitates the entry of hundreds of tons of food and water. Is it a ceasefire for 3 days so that medical supplies and fuel can enter? The answer is also no, as truckloads of these supplies enter Gaza through Israeli facilitation every day. वही तो फिर क्यों चाहिए जब सब कुछ वो How चाहिए about था a week-long ceasefire to evacuate wounded civilians? No again. This is already happening on the ground, alongside field hospitals and floating hospital ships. Israel facilitates all these efforts. So I ask again, what is the meaning of this humanitarian ceasefire? There's no such a thing. This is one big lie, a whitewashing of the truth. A humanitarian ceasefire means a terrorist-saving ceasefire. We're not stupid. This resolution only seeks an end to the war against Hamas Nazis. Sorry for the words. You don't give a damn about Israel and our future. बिल्कुल An end to the war means turning our backs on the hostages. It means ensuring Hamas's continued rule in Gaza. I don't get it. We're 18 years of oppression in Gaza, by the way, against Palestinians, digging terror tunnels into our soil, into our territory, and indiscriminate rocket fires, thousands and thousands on Israeli civilians. That wasn't enough for you? All a ceasefire secures is a future for the genocidal jihadists. It is only Hamas that this resolution is defending. Stop hiding your intentions behind your suits and diplomatic wording. Humanitarian ceasefire. This resolution has a distorted agenda. At least make this clear to all member states. This resolution aims to keep Hamas in power. Period. मैं इनको बोलूंगी कि हिंदी में ट्रांसलेट कर दे ताकि कईयों को अगर नहीं समझ में आया तो जस्ट आप लोगों को जो है ना मेन क्या बात हुई है वो पता चल जाए। देखिए फ़लस्तीन वाले कह रहे थे कि आप जो है सीज़ फायर करिए, मतलब लड़ाई रोकिए कुछ समय के लिए, क्योंकि वहाँ पे सभी सिविलियंस की
डेथ हो रही है। सिविलियन मतलब जो लोग आर्मी में नहीं है, साधारण इंसान, उसकी ये मौत हो रही है, आम इंसान की मौत हो रही है, बच्चों की मौत हो रही है, विमेन की मौत हो रही है, लेडीज़ की मौत हो रही है, जेंट्स की मौत हो रही है, जो आर्म्ड फोर्स में नहीं है उनकी मौतें हो रही हैं। तो उसको रोकिए, शांति दीजिए। और इजराइल कह रहा है कि तुम भूल गए कैसे हमास ने हमें अटैक किया था, पहले सीज़ फायर थी। तो इजराइल कहता है शुरुआत में क्या था, सीज़ फायर थी, हमास ने तोड़ी सीज़ फायर, हमास ने अटैक किया, उसने बुरा सलूक किया औरतों के साथ, बच्चों के साथ। वो मुझे याद दिलाना है, क्या मुझे याद दिलाना है कैसे आप बच्चों लोगों का कैसे तुमने पूरे घरों को आग लगा के फैमिली मार खत्म कर दी, खत्म की, रॉकेटों तुम लोग फेंकने लग गए हो, तो हमारे लोग किडनैप करके ले गए, तुम उनको हॉस्टेज को मार रहे हो। अगर हमने वॉर रोकी, फायदा किसका होता है, हमास का। हम तो चाहते हैं हमास को पूरा डिस्ट्रॉय कर दें। वो कह रहे हैं तुम लोग चाहते हो कि सीज फायर करके हमास को बरकरार रखें, हम चाहते बोल रहे नहीं, हम सीज फायर नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ही हमास को शांति नहीं देंगे। वो कह रहे हैं क्या तुम चाहते हो कि इजराइल खत्म हो जाए क्या? वही तो सीज फायर का वो मतलब कह रहे है तुम्हें इजराइल की परवाह ही नहीं है, किसी को इजराइल की परवाह ही नहीं नहीं है। कह रहे हैं अगर तुम्हें फूड चाहिए हम तो रोज भेजते हैं ट्रक। बोलते हैं हम खुद जो है रोज भिजवा रहे हैं, ट्रक भिजवा रहे हैं, पानी के खाना हम तो रोज भिजवा रहे हैं। तो तुम्हें किस बात की सीज फायर चाहिए? हम ही माल भिजवा रहे हैं, चीजें चाहिए वो तो रोज हो रही हैं और बहुत लार्ज अमाउंट क्वांटिटी में हो रही है। तो सीज फायर किसके लिए कर रहे हो? सीज फायर इसलिए चाहिए ताकि हमास के लोग जो है वो वहां से बच के निकल जाएं, या वो फिर से ताकतवर बन के रीग्रुप होके कभी भी वो छोड़ के ना जाए गाजा। तो वो कह रहे हैं कि हमास के लोगों ने ही जो गाजा के साधारण लोग हैं उन पर अत्याचार किया था और उन्होंने अटैक किया था। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमास को ख़त्म किया जाए और कोई रुकेगी नहीं बीच में लड़ाई, क्योंकि हम हमास को आगे रीग्रुप करके स्ट्रॉन्ग नहीं करने वाले। हम उन पे अटैक करते रहेंगे जब तक हमास खत्म नहीं होता। ये जो इजराइल के साथ हो रहा है ना, ये जब किसी और के साथ जो इनको सपोर्ट अलग इनके साथ नहीं है, इजराइल के साथ हो रहे, जब इनके साथ होगा ना तब इनको समझ में आएगी कि कितनी बड़ी बात हुई है इजराइल के साथ। और उसको बोल रहे हो कि तुम अब अपने बचाव के लिए, अपने लोगों के लिए जिनको उन्होंने अभी तक पकड़ा हुआ है उसके लिए कुछ मत करो, सीज फायर कर दो। इजराइल कह रहा है कि उसको सीज फायर थी ना, उसको खत्म करना है। वो हम करेंगे। उन्होंने मैप दिए थे, डिजिटल बताया था लोगों को कि इस एरिया में चले, यहाँ पे अटैक नहीं होगा। मगर ठीक है, साधारण लोगों को इधर उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि चक्कर ये है कि उनके साथ ही मिले हुए हमास। तो साधारण इंसान के साथ हमास मिल गया और वो आ रहे हैं, हमास को ढूंढ के मार रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं ये वो हमास है जिसने इतने सालों यही पैलेस्टीन में ही हो रहा है। वो कह रहे हैं कि यहीं पे तो हो रहा था ना कि भैया तुम्हारे यहाँ पे की टनलों सालों से टनल बना रहे हैं, और ऐसी टनल बनाई है जो हमारे इलाकों के अंदर तक घुस गई हैं। उन्होंने इतनी टनलें बना ली कि इनके एरिया के अंदर तक वो पहुंच चुके हैं। तो कह रहे हो आप कैसे, क्या बोल रहे हो? अब आप अभी तुम्हें याद आ रहा है सीज फायर का। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, आपको क्या लगता है सीज फायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।